shift our focus to the national capital, because you may recall the riots that occurred in northeast Delhi in February 2020, in which 53 people lost their lives and more than 581 were injured. Now today we are once again talking about the big plot on the national capital, because a Delhi court has convicted 9 persons in connection with the riots. But what is all the more sensational is the court's observation, because one couldn't help but highlight it, because it has once again busted the Muslim pogrom narrative that was peddled by a whole ecosystem. Today, the broader plot to target Hindus has once again been established, and that is why the focus is back on the Northeast riots case. Now, in the complaint filed by Rekha Sharma, whose house was destroyed when rioting gripped East Delhi, the additional sessions judge ruled that it was well established that all the named accused persons in this case became part of the unruly mob, which was guided by communal feelings. She observed that the common objective was to cause maximum damage to the properties of persons belonging to the Hindu community. So that's a crucial observation which came in from the court side. Meanwhile, in the Rahul Solanki murder case, 8 accused have been charged with murder and arson, and the court has once again noted that a riotous mob attacked people of one particular community. And while the additional sessions judge has left nothing to doubt by stating how this was mindless firing and pelting of stones to target specifics, the family of Rahul, while narrating their ordeal, also spoke of the circumstances under which they were forced to shift to another house. Let's listen in to these reactions which are coming in. किसी ने नहीं बताई गोली लग गई है, चोट लग गई है। उसके पापा चोट सुन के तुरंत ही बाहर निकल गए, लेकिन मेरे को पता नहीं थी कि बेटा का ऐसा हो गया। मैं भी भाग जाती, और वहाँ के ने फिर वो टॉर्चर करने लग गए हम लोगों को। कौन? ये घटना के बाद आपको टॉर्चर करने लग गए? क्या बोलते थे? आए करे तुम स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो, ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं 8-8 लोग, 10-10 लोग मुसलमान, तो तुम स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट घर आते थे कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं। मैंने कह दी कि मेरा बेटा गया है, मुझे पता है ना, तुम्हें थोड़ी पता है, मेरा बेटा गया है कि अच्छा नहीं कर रहे, हम 30 साल से तुझे यहाँ रख रहे हैं, तुझे पाल रहे हैं, हम रखा रहे हैं तुझे इस तरीके से। बेटा मेरा पीछे देख रहा था जी, सब लोग आगे खड़े थे, उन्होंने वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, उन्होंने कहा ये थोड़ी देखा कि ये मानना है, हैं? ये मानना, ये थोड़ी देखा, ये वो तो गोली चला दी पीछे थे। और टारगेट क्या मैम, वही था कि बस 2 पक्ष हैं, 2 गुट में लड़ाई होती है कि एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम है। बस वो है कि हिंदू अपनी सेफ्टी के लिए खड़े हुए थे कि घर को बचाने के चक्कर में कि हमारे घर में ना आ जाए, हमारे घर ना जला दें, और वहाँ पे टारगेट बना रखा था, वहाँ कट्टे ले लेके खड़े थे, और वहाँ तो कोई था ये नहीं था मेरे भाई को टारगेट बनाया हो। बस क्या मैम, कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, जिसका जाता उसको पता लगती है। क्यों शिफ्ट हुए? वो जो घर आप वहाँ रह रहे थे, वहाँ से यहाँ पर क्यों आए? प्रेशर टॉर्चर करा जा रहा था ना। The Times now in fact managed to confront an eyewitness who is also Rahul's cousin, who accompanied Rahul Solanki on that fateful day. He too says no verbal argument took place and Rahul was targeted by the virtue of being a Hindu. Rahul Solanki, a 27-year-old engineer, was killed in the Delhi riots that took place in the year 2020. However, his family is unable to overcome the loss that they had to bear then. But the court has framed charges against those 8 main accused and have particularly stated that this was a target killing for Hindu community in this particular incident. Ahead me is there a square where around a mob of 500 to 600 people were present. Shops were being set ablaze, stones were pelted, bottles were thrown, and amidst that, Rahul was passing by to that dairy shop to buy milk, and at that point of time, along with his brother, while he was passing by, he was surrounded by a mob and then he was shot here at the same particular area where we are standing right now. However, charges are being framed against those 8 accused, and court have particularly mentioned that it was a targeted killing done by those accused in this particular incident. तो भैया के गोली लगी यहाँ। आप उनके साथ थे तब? वहाँ बिल्कुल साथ में था। कितनी बजे की घटना होगी ये? ये करीब 5 बजे के बाद की बात है, 5:30 के करीब की बात है। नहीं, हमारी कोई बहस वगैरह नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं भैया की, कोई बहस वगैरह नहीं थी। राजधानी स्कूल वाले हैं प्रिंसिपल, उनकी पूरी मिली भगत थी, मतलब उन्होंने पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये कांड किया गया था। 3-4 दिन पहले से ही उन्होंने ईंट मंगाई, ईंट चढ़ाई, ईंटें तोड़वाई। हम लोग तो ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जिन्होंने प्लान किया था
जो पहले से साजिश कर रहे थे पहले तो उनको सजा की जाए, और उसके बाद जहाँ पे ये प्लान किया गया है वो जगह ही बिल्कुल खत्म कर दी जाए, स्कूल तोड़ के समाप्त कर दिया जाए। एक बार वारदात हो चुकी है, क्या लगता है वो आदमी दोबारा वारदात नहीं कर सकता? Now remember, a whole ecosystem, even the Delhi Minority Panel report under AAP Sarkar in Feb 2021 suggested that this violence was a pogrom against Muslims. In fact, several politicians also declared a targeted attempt against the minority community, but today the same lobby ought to have been silenced when it comes to the observation which came in from the court side, because even after the court observations, the opposition continues to case doubts on the police investigation. I have all doubt about the investigation done by the police. It's a one-sided investigation. Even High Court has also made a very strong remark about the working of the police as far as making out the cases against a particular community. No, so far no investigation has been done. I demand that there should be investigation by other agencies. The investigation was not very satisfactory, and several allegations were made against the investigators to be biased. In such a case where there are communal clashes between two communities, the investigators must do justice. जो लोग दंगों की राजनीति करते हैं वो आज यूपी में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी बैठे हैं। जो इसमें नुकसान जिनका हुआ, हिंदू थे या मुसलमान थे, दोनों गरीब थे। प्लांट किसने किया? ये है कि जो पश्चिम यूपी से, नोएडा से लेकर बागपत, मेरठ से जो लोग रात में बसों में भर के हिंसा के लिए दिल्ली में लाए गए, तो सेंट्रल आईबी हमारा क्या कर रहा था?